Starlord here and we are out for a job for today. तो क्या हो रहा है कि मेरा स्टीयरिंग रैक में थोड़ा आवाज़ है, तो वी कैन डिलीट दैट बाई मीन्स यू डोंट नीड टू चेंज द होल स्टीयरिंग रैक फॉर VW एज इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 10 to 12,000 आता है. सो क्या आवाज़ आ रहा है, आई जस्ट डू दैट. ओके, you can hear that, right? See, so this sound can be deleted. स्टीयरिंग रैक में एक प्रीलोड नट होता है, इट्स अ 19 बोल्ट, तो वी कैन जस्ट टाइटन दैट अप अ बिट and we can solve this sound wala thing. I hope we can solve that, or else we'll change the rack later on. Means it can be means क्या होता है कि स्टीयरिंग रैक में एक रबर प्लास्टिक पार्ट होता है, वो घिस जाता है. सो दैट इज़ द मेन इशू वाई पीपल चेंज द स्टीयरिंग रैक. बट इन माइन वन वो अभी तक इट्स इन वेरी गुड कंडीशन. मैं एक बार दिखाता हूँ साइड से, तो वो पता चल जाएगा कि मैं ये जो हिला रहा हूँ पूरा एग्जैक्ट चीज़ मेरा व्हील्स में चाह रहा है. मीन्स हल्का भी थोड़ा हिलाऊंगा तो मेरा व्हील्स हिल रहा है. सो दिस इज़ द थिंग. सो आई जस्ट शो यू जस्ट अ सेक. तो मैं बाहर आ गया. सो इफ़ आई जस्ट मूव दिस अ लिटिल, सी मैं हल्का हिला रहा हूँ बट वो रिफ्लेक्स भी पूरा चक्के में आ रहा है. So for this thing we need to just adjust the preload. So I'll just I'll put the jack and to like a brick or two underneath of the wheel. फिर अंदर घुस के the rack is gonna be this side. So I'm gonna show you. पहले वो सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा कार को उधर खिसका देता हूँ क्योंकि अंदर घुसना पड़ेगा. So this is the thing. So let's go. So this is the condition. तो जैक से ऊपर उठा लिया है and I've kept two bricks underneath the wheel. As अगर जैक फॉल्स कर जाए तो पूरा गाड़ी नीचे ना आ जाए क्योंकि मैं अंदर रहूँगा. And this is the thing. This is the 19 का bolt and this is the handle और एक मिलता है छोटा सा. So you can just clip that in this one, but वो चीज़ नहीं मिला है मुझे, तो I have got this thing. तो ये अंदर अटका के I can just revolve. तो ज़्यादा घुमाना नहीं है, you need to just revolve it around 5 degrees to 10 degrees as it gonna take a good sort of time for adjusting. as ज़्यादा टाइट कर दोगे तो पूरा स्टीयरिंग व्हील टाइट हो जाएगा. तो डू इट माइन्यूटली एंड स्टार्ट करके देखना उसके बाद कि स्टीयरिंग व्हील का कैसा हालत है. सो दिस इज़ द थिंग. इट्स गोना टेक अ बिट टाइम. सो लेट्स गो अंडरनीथ. सो वी आर अंडर हियर एंड दिस इज़ द बोल्ट. सो ये दिख रहा है, ये this bolt is the preload and this is the steering rack. Basically this is the preload and this is the steering rack. तो इधर अटका के you need to just rotate it clockwise slightly. so वो समझ के टाइट देना. so yeah, let's begin. अरे भाई साहब, so this is the second time I'm just giving a one more revolve. इधर घुसाने का, फिर हल्का करके फिर दबाने का. डैम इट्स टाइट यार, 2 हाथ लगने वाला है. सो लेट्स डू दैट. दिस इज द थर्ड एडजस्टमेंट. उसके बाद भी स्टीयरिंग व्हील इज टोटली जैम्ड. आई नीड टू लूजन द नट अप. इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब. So after 6 time of adjustment, sound has gone a bit down. हल्का सा है. So the conclusion is I need to change the rack, but not now. ये इस साल चल जाएगा आराम से. So hopefully next year or by this year end I'll change the rack. And yeah, so this is the thing.
So it's take a lot of time for adjusting. So एकदम जोश जोश में ज़्यादा टाइट मत दे देना, तो पूरा स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा, इशू हो जाएगा. So this is the thing. And apart from that, it's a good to try stuff. अगर कॉन्फिडेंस है तो करो, और एल्स मत करना. As you, if you just, if you're curious that are your steering rack is okay or not, so you can just do that, or else you can just change the steering rack if you have the money. So this is the thing. So for now I could have changed the steering rack, but ये चल जाएगा, तो अभी के लिए चलाऊंगा इसमें, नो इश्यूज़ इन दैट. सो जो क्या होता है, उसका अंदर का जो पेनियन होता है वो घिस घिस के थोड़ा पतला हो जाता है, इसीलिए ये घट घट वाला साउंड आता है. प्रीलोड से थोड़ा टाइट हो जाता है, मीन्स फर्मली बैठ जाता है. तो मेरे वाले में ज़्यादा प्रीलोड दूंगा तो मीन्स पूरा स्टीयरिंग व्हील टाइट हो रहा है. प्रीलोड में थोड़ा ज़्यादा टाइट दे दिया था, तो उसके बाद फिर लूज़ करके एक मिनिमम मीन्स बेयर मिनिमम एडजस्टमेंट में रख दिया अभी के लिए. एंड इट्स अ हेल ऑफ ए जॉब, मीन्स बार बार अंदर घुस के टाइट करो फिर लूज़ करो, इट्स अ हेल ऑफ ए जॉब. सो या, this is the thing. This was the video for your steering rack preload adjustment. So yeah, so you can just get the 19 wala bolt. You can try it on yourself at your home, and it can save you around 10,000, or else it might cost you 10,000 also. As agar kharab hua to it's gonna cost you, agar it get fixed, so it's gonna save you 10k. So for now 10k is saved from my side. So yeah, जब चेंज करूँगा I'll share these things with you guys. So yeah, bye. Starlord signing off. टेक केयर, राइट सेफ. चप्पल वप्पल सब कुछ खोल के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अंदर घुसा फिर निकला 6 to 7 टाइम्स ये किया है मैंने आज. सो या, चलो बाय. Starlord signing off.